अस्सलाम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जुनैद इस्लाम एंड आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जुनैद। अगर आपको लेक्चर इंग्लिश में समझना है तो सबटाइटल को ऑन करें। या आपको तस्वीर दिख रही होगी, मैं आपको इसके अंदर सी वाले डॉट को दबाइएगा और ऑन हो जाएगा। इंशाल्लाह आज जो हम पढ़ेंगे वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने जो पिछली वीडियोस नहीं देखी वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि पिछली वीडियो जो है इंटरलिंक यानी कि ताल्लुक़ है इस वीडियो के साथ। क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। अगर आपको ये लेक्चर समझना है तो पहले सबसे आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप पिछली वीडियोस देखें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए तो आप जल्दी से पिछली वीडियोस देखें, फिर ही आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा। तो चलते अपने लेक्चर की तरफ। और लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलते अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So today's lecture we will discuss that is kinds of sentence. For lecture we will discuss that is am are uses are thing, that is five thing we will discuss in lecture 7 part E. We will complete it alhamdulillah inshallah. Today's lecture we will discuss kinds of sentence. There are four kinds of sentence. Whose four kinds are, that is, first of all, affirmative, negative, interrogative, interrogative. Affirmative सादा या मुस्बत, नेगेटिव मीन इनकारिया, इंटेरोगेटिव सवालिया, इंटेरोनेगेटिव सवालिया इनकारिया. And we will discuss that is before, that is am are, and how many subject is used in is, that is he, she, it, singular noun, and the subject is used, that is I. And in are there are four subject used, that is we, you, they, plural noun. Why I write this I will tell you after making the sentence. So let's start and making our sentence. First of all, we make a sentence of affirmative, and the verb that is used is subject. We use, that is he or she. He is ready, or she is ill. And negative, he is not ready, she is not ill. Interrogative, is he ready? Why I write is, because in this sentence I ask someone, I ask my friend that is you ready, क्या तुम तैयार हो? तो सबसे पहले we use verb first and then subject in interrogative, in asking a question. And is she ill? And the main thing I will tell you in negative sentence, we use that he isn't ready. Many of the native speakers speak like he isn't ready, or we can say that she isn't ill. If is plus not, we make isn't. If we ask a question in interrogative, in इंटा वो तैयार नहीं है, is he not ready. Interrogative sentence. And we also use interrogative sentences, that is question mark is necessary in question sentences, in interrogative sentences.
In interrogative sentences we use is he not ready. We also use question mark and we also use not. Then we make isn't, and if we join this then we don't write not again and again in sentence. I write isn't he not ready. It's a wrong sentence. And if we write that is not he ready, it's also a wrong sentence. It's considered wrong. इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होगा, वर्ब में वो वर्ब एम इस्तेमाल होगा और जो सब्जेक्ट होगा वो हमारे पास होगा आई। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी, बनाएंगे कैसे, हाउ टू मेक अ सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव आई एम. We will discuss before how to make a sentence of affirmative. So now we will discuss. We also use changes the subject and also the verb. Now we use vocabs like I am ill, or you can say that I am ready. Now we make a negative sentence. In negative sentence we will make sentence like I am not ill or I am not ready. If we discuss a interrogative sentence, so interrogative sentence we will ask a question. In negative sentence you can say that I ain't ill, I ain't ready. We will speak two sentence or in the form of this or in the form of this. Now we discuss interrogative sentence. In interrogative sentence we ask a question to someone. Am I ill? Why I write I in big letter, like I write am I. We use in the mid of sentence am I ready, and in the last we put the question mark. Am I ready? Am I ready? Why I use big letter? Because I discussed before, that is he ready, and I write is he h in small letter. Why I write a small letter and a big letter in block letter, like am I ready? English people use I in block letter or in big letter while using the sentences. Now we discuss interrogative. In interrogative sentence we will discuss ask someone am I not ill, or you can say that ain't I ill. We use a question mark in the last. Am I not ready, or you can say that ain't I ready. Wrong sentences I write in the below that ain't I not ready, am not I ready. It's a wrong question. If you ask someone, you can ask someone, am I not ready, am I not ill, ain't I ill, ain't I ready. Now we will discuss the other verb that is are. We use the subject that is we, you, they, plural noun. We'll discuss any of the subject and talk about that subject. We use they subject. Affirmative, negative, interrogative and interrogative. Affirmative sentence is, now if we discuss they are, it is a simple sentence. they are ill, वो बीमार हैं. they are ready. Now if we discuss a negative sentence, we use not in the middle of the sentence. They are not ill, or you can say that they aren't ill. And the other sentence you make like they are not ready, they aren't
ready. Use the other kind of sentence that is interrogative. Now we'll discuss. We ask someone question that are they ill? क्या वो बीमार हैं? Are they ready? We use question mark at the end. And the other kind of sentence lastly that is interrogative. We ask someone question that is are they not ill? You can say that aren't they ill? And the other sentence you make like are they ready? Are they not ready? And you can say that aren't they ready? In the last we use question mark. The wrong sentences we use aren't they not ready? It is a wrong sentence. And the other one that is are not they ready? It is the. So that's our lecture. We will discuss kinds of sentence. There are 4 kinds of sentence we will discuss in this lecture. तो ये था हमारा लेक्चर जो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े। काइंड्स ऑफ सेंटेंस टोटल 4 हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव। ये हमने 4 सेंटेंस पढ़े जिनका इस्तेमाल हमने देखा कि कैसे इस्तेमाल होता है और वर्ब का भी इस्तेमाल किया हमने अपने सेंटेंस के अंदर। इन चारों के काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया और अब भी बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो दोस्तों, जो अगर आप समझते हैं, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं भी फ़ीस देता हूँ, मगर मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। जो भी मैं सीखता हूँ वो मैं सिखाता हूँ। वो जो पैसे खर्च नहीं कर सकता तो उसके लिए ये एक तरह से सदका जारी है। तो आप अगर समझना चाहते हैं, वाकई में आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसे पढ़िए और सीखें और अपने दोस्तों से शेयर करें जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।